What's up, gentlemen? I'm Keshav. Welcome back to the Spruce Up. On this channel, we will talk about advanced fashion, fitness, grooming, and a lot of other things which will help you guys to step up your lifestyle game. As you guys go to gym, most of you guys train only the major muscles like chest, arm, back, legs, shoulder. But the thing is, there are a lot of other muscles which also needs to be trained. In fact, the only muscles which you guys are training, आप उनको भी अच्छे से train नहीं करते हो. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा the part of main muscle which also needs to be trained for complete development of that muscle. But you guys miss that out in your training session. And also I will show you some exercise which specifically trains that part. So without further delay, let's get into the video. So let's start with the first part, which is shoulder, specifically posterior delt. We guys do train our shoulders, but we misses out the posterior delt. हमारे shoulders जो कि deltoid muscle से बने होते हैं, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, anterior deltoid, middle deltoid and the posterior deltoid. हम जो भी shoulder की एक्सरसाइज करते हैं, उनका मेन फोकस या तो anterior deltoid पे होता है या फिर middle और lateral deltoid पे होता है. And in this we misses out our posterior, and sometimes we do train our posterior delt, but एक एक्सरसाइज से हमारे posterior delt की complete development नहीं होती है. For example, you guys do face pull. Some says कि face pull shoulder के लिए होता है, and some says कि face pull back के लिए होता है. But the thing is कि face pull train the upper portion of the back and the posterior shoulder. कोई भी एक्सरसाइज किसी एक सिंगल पार्ट ऑफ मसल के लिए नहीं होती है, बिकॉज हर एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. बट वी डू एक्सरसाइज फॉर दैट पर्टिकुलर मसल बिकॉज इट इज द मेजर muscle which is involved in that exercise. Fully developed posterior delt muscle helps you guys to give your back a well-defined muscular look, and also it retracts your shoulder to the back ताकि आप ऐसे झुके हुए ना रहो. Instead, you will be like this. And to train the posterior deltoid, you need to add this exercise in your shoulder workout routine. You need to sit like your chest facing that cushion on the chest fly machine and the handles parallel to each other. And keep in mind, keep your back straight. And then slowly release the tension in your muscles. For other exercise, you need cable fly. Stand in the middle of the cable fly machine and grab the cable from opposite hand. Like from your left hand, grab the right hand side cable, and from your right hand, grab the left hand side cable. And perform this exercise like you are making a big cross with your hand. Now the second part, which remains less developed, is the inner thigh. Leg is a very huge muscle, and we do train our quads, calves and hamstrings. बट इस सब में हम इनर थाई को ट्रेन करना भूल जाते हैं. और अगर आप जिम कर रहे हो, देन यू डेफिनेटली नीड अ स्ट्रॉन्ग इनर थाई, बिकॉज इनर थाई हेल्प्स टू स्टेबलाइज द लोअर बैक, हिप मसल्स, नी एंड द कोर. और अगर आपका इनर पोर्शन ऑफ थाई वीक रहता है तो आपके लोअर बैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. और आप अगर नहीं चाहते कि आपकी मेहनत खराब हो, देन यू ऑल्सो नीड टू ट्रेन द इनर थाई. यू नीड टू एड लेग होल्ड इन योर वर्कआउट. And the very best you can do is, after doing squats, go to the wall or anything which supports your back and keep your legs wide open and hold this position for the maximum time you can, because this will help to make your inner thigh strong. And the second exercise, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़कियों के लिए होती है, but you guys can also do that, which is side leg raises. For this, you need to wear an ankle strap and then tie it with the cable. And then raise your leg laterally to the point you feel a nice and good stretch in your legs, and then slowly bring your leg back to the original position. Adding these two exercises in your workout routine will definitely help you to get a strong inner thigh. Do you guys know, जब कोई एक्टर अपने आप को शर्टलेस सीन के लिए प्रिपेयर करता है तो वो अपने वर्कआउट सेशन में कौन से बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है? मे बी यू नो अबाउट चेस्ट और शोल्डर्स, बट what you guys are missing is trapezius muscle, aka the traps, because traps ज़्यादा लोगों में लेस डेवलप्ड होता है, which is not good for those जो एक muscular physique चाहते हैं, because this muscle helps you guys to give you a muscular appearance. And not just this, it also helps your scapula to elevate, retract and depress, and this helps your scapula to give it more mobility and strength, जो अल्टीमेटली आपको शोल्डर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी. और अगर आप अपने स्ट्रैप्स को ट्रेन करना चाहते हो, देन सेट अ बारबेल ऑन द स्टैंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड ऐड सम वेट्स. कीप योर बैक इन न्यूट्रल पोजिशन ड्यूरिंग द होल एक्सरसाइज एंड देन जस्ट रिट्रैक्ट योर स्कैपुला अपवर्ड with your traps and shoulder and slowly lower it down. This increases the tension in your traps and helps them to develop. You can also do it with the cable machine.
उसके लिए आपको बस एक मीडियम साइज हैंडल केबल मशीन में नीचे लगाना है एंड यू हैव टू रिपीट द सेम मूवमेंट्स as you did with the barbell. Adding these exercises to your workout routine will definitely help you guys to develop your traps. One of the most attractive part of men's body is arms. And कौन नहीं चाहेगा कि उसके arms बड़े और अच्छे दिखें. But the problem is you still miss a part of it in your training session. आपने देखा ही होगा कि जिम में ज़्यादातर लोग अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने में लगे रहते हैं और कुछ लोग अपने फोर आर्म्स को भी ट्रेन कर लेते हैं. But they mostly train the anterior portion of the forearm. But you guys are one step ahead of them, so you also need to train the posterior, medial and lateral part of the forearm. Round and muscular forearm is one of the sexiest thing a man can have. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको अपर बॉडी की सभी एक्सरसाइज में हेल्प करेगा बिकॉज सभी एक्सरसाइज में हमें वेट्स को पुश और पुल करने की जरूरत पड़ती है यूजिंग आवर हैंड्स. और अगर आपके फोरआर्म स्ट्रॉन्ग होंगे देन दिस विल हेल्प यू टू होल्ड बारबेल्स एंड डंबल्स मोर फर्मली एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स. And it also helps to generate more force जब आप exercise कर रहे होगे, which ultimately helps you to lift more weight. To work out your posterior forearm, you need dumbbell and a bench. आप बारबल भी यूज़ कर सकते हो, बट बारबल्स का वेट इतना ज़्यादा होता है एंड स्टार्टिंग में आपकी फोर आर्म्स काफ़ी वीक होती हैं, तो आप बारबल से एक्सरसाइज इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने फोर आर्म्स बेंच पे रखने हैं एंड देन यू हैव टू लिफ्ट द वेट अपवर्ड यूजिंग योर रिस्ट and then slowly take it down. Use light weight for this and do as many reps as you can. आप इस एक्सरसाइज को खड़े होकर भी कर सकते हो बट उसमें आपके फोर आर्म्स से थोड़ी टेंशन कम हो जाती है बिकॉज उसमें आपकी बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होती है. दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको रोप को केबल मशीन में ऊपर लगाना है एंड देन लाइक ट्राइसेप्स यू हैव टू पुल इट डाउन एंड इंस्टेड ऑफ रेजिंग योर एल्बोज you just have to raise your wrist, and this exercise is very effective for the posterior medial portion of the forearm. So these are the parts which you probably left untrained during your workout session, or maybe you work out them but they are less developed. So you just have to add these exercises to your workout routine ताकि आपके ये पार्ट्स और अच्छे से डेवलप हो सके. I hope this video does make a difference in your workout session and helps you to get more defined muscles. And if it does, then make sure to like this video and subscribe to my channel. That's all for this video. I'll meet you in next video. Till then, goodbye.